Good morning, friends. So, guys, we are here for the second lecture of cost ledger accounting. In previous lecture, we understood that even though cost accounting is ultimately one of the branches of accounting only, but it has different objectives as compared to financial accounting. Financial accounting deals with only recording of actual transactions, maintaining of primary records, and preparation of financial statements. That's it. So from recording the business transactions into journal till preparation of financial statements, that is what is done in financial accounting. But interpretation of these financial statements is done through various different branches of accounting, and one of the branches is cost accounting, in which costing related issues are discussed. Yes, guys, get settled first. Let's start. So we understood yesterday that even though these two are branches of accounting only, but there are differences in that. Certain issues which we deal with in financial accounting, we do not deal with in cost accounting. Certain items we saw that we consider only in cost accounting, we do not consider them in financial accounting. And so there are differences. There are two ways of maintaining cost records. One is non-integrated, one is integrated. As the name suggests, non-integrated means where the financial accounts and cost records are maintained separately, and integrated means where these are maintained in integrated manner. Integrated means combined manner. So non-integrated and integrated. अगर नॉन इंटीग्रेटेड है तो दोनों रिकॉर्ड्स अलग अलग मेंटेन हो रहे, तो जाहिर सी बात है दोनों के प्रॉफिट्स भी अलग अलग आएंगे. फाइनेंशियल प्रॉफिट्स विल बी सेपरेट, कॉस्ट प्रॉफिट्स विल बी सेपरेट, एंड बिकॉज देयर विल बी टू डिफरेंट प्रॉफिट फिगर्स, you need to reconcile them and there will be reconciliation. But when we come to integrated, जो आज अपन सीखने भी वाले हैं, in integrated, because the cost and financial records are maintained in combined manner, in integrated manner, we get only one profit figure for both, and therefore no question of any reconciliation. So if question comes on reconciliation, you have to understand we are talking about non-integrated system only. इंटीग्रेटेड में रिकन्सिलिएशन का सवाल ही नहीं आता. तो जब रिकन्सिलिएशन के प्रॉब्लम्स में अपन चलेंगे तो सारे के सारे वो नॉन इंटीग्रेटेड पे रहने वाले हैं. कल हम लोगों ने नॉन इंटीग्रेटेड में कौन से अकाउंट्स मेंटेन होते हैं वो भी डिस्कस किया था. एक क्विक रिवीजन कर लेते फिर आगे चलते. विच अकाउंट्स वी ओपन? स्टोर्स लेजर अकाउंट, वेजेस अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट, WIP अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट, selling and distribution overheads account, cost of sales, costing profit and loss account. करेक्ट, वेरी गुड. ये तो सारे हो गए जो अभी मैंने बोले, ये सब प्राइमरी अकाउंट्स हो गए. और डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए अपने को कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ये भी तो लगेंगे ना. बट दीज अकाउंट्स आर इररिलेवेंट एज पर एज कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर कंसर्न, and therefore these accounts are not opened in cost records. But then to complete the double entry we need to have one control account, and that control account is named as general ledger adjustment account. Once again I am repeating, it is also called as cost ledger adjustment account. एग्जाम में जो नॉमेनक्लेचर यूज हुआ है, जो अकाउंट हेड बोला है वो अकाउंट हेड यूज करो. एग्जाम में अगर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बोला है तो वो यूज करो, अगर कॉस्ट बोला तो कॉस्ट यूज करो, दोनों का मीनिंग एक ही है. Then we solved two problems yesterday, और दोनों प्रॉब्लम में आपने देखा कि हमने बाद में ट्रायल बैलेंस भी बनाया, एंड यू सी दैट द ट्रायल बैलेंस इज टैलीड. डबल एंट्री कंप्लीट हो रही है तो ट्रायल बैलेंस तो टैली होना ही पड़ेगा ना. एंड आई एम श्योर कि कल अपन ने जो कुछ डिस्कशन किया और दो प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो अभी एंट्रीज भी दिमाग में बैठे हुए कि कैसे कैसे एंट्रीज पास होते हैं. लाइक वेयर डू यू एब्सॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स, WIP, वेयर डू यू एब्सॉर्ब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, very good, and selling and distribution overheads, cost of sales.
If there is under absorption or over absorption of any category of overheads, then either it is carried forward to next period depending on what is the policy followed, or it is transferred to costing profit and loss account. Normal loss, abnormal loss की भी हमने बात की थी. Normal loss is certain loss, you can't avoid that loss. वो loss होके रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते. So that is accounted as factory overheads, and that is debited to factory overheads. But when it comes to abnormal loss, being abnormal, it is directly debited to costing profit and loss account. I hope you recall all those things. Yes. So shall we continue with our practice? कल 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. Let's solve third one. Come to page number 994. Page number 994. From the following details show the necessary accounts in cost ledger. Materials, work in progress, finished stock, opening balance, closing balances are given. Transactions during the period: material purchased, wages paid, overheads incurred, overheads absorbed, and sales. So based on this, you are supposed to prepare necessary accounts in cost ledger. Let's solve. In cost ledger, stores ledger account. Stores ledger account. Just for 5-6 lines. Stores ledger account. Then wages account. Wages account. Factory overheads account.
WIP account. WIP account. Finished goods account. Cost of sales account. There are no administration and selling and distribution overheads given in the problem, so no need to draw those accounts. Cost of sales account, then sales account. Costing profit and loss account. General ledger adjustment account. General ledger adjustment account for around 10 lines. रेडी फॉर्मेट? कौन से अकाउंट बना एक बार देख लो. Stores ledger account, wages account, factory overheads, WIP, finished goods, cost of sales, sales, costing profit and loss account, and then general ledger adjustment account.
करें स्टार्ट? यस। अगर कल के एंट्रीज दिमाग में है तो अभी आप बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट हम सॉल्व कर पाएंगे। ऑनलाइन में स्टूडेंट्स का रेडी है फॉर्मेट है, तुम लोगों का क्यों नहीं हो रहा है रेडी? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स शो द नेसेसरी अकाउंट्स इन कॉस्ट लेजर। Materials means stores. Opening and closing both the balances are given. Two balance brought down. 8,000. Buy balance brought down. Carried down. Buy balance carried down. 11,000. WIP. Two balance brought down. Two balance brought down. 5,000. Buy balance carried down. 9,000. Finished goods. Two balance brought down. 10,000. Buy balance carried down. 12,000. Guys, I want full attention here now. There is one hidden adjustment in the problem which you need to understand and need to give the effect. And if you forget that, your problem is not going to tally. First, let us talk about the opening balances given in the problem. मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस 8,000 रुपए दिया है, WIP का 5,000 दिया है और फिनिश स्टॉक का 10,000 रुपए दिया है। तो ऐसे टोटल तीनों में डेबिट बैलेंसेस है 8 और 5 13 और 10 23,000, 23,000 का ओपनिंग डेबिट बैलेंस है। मैं कल भी आपको ये बात समझाया था कि सिर्फ ओपनिंग में डेबिट बैलेंस है ऐसा कैसे होगा? देयर हैज टू बी क्रेडिट इफेक्ट ऑफ दैट, एंड दैट क्रेडिट इफेक्ट इज इन दैट कंट्रोल अकाउंट कॉल्ड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब जैसे कल के सम में दिए हुए थे अपने को उसके बैलेंसेस, अब ये सम में दिया नहीं है, बट नहीं भी दिया है तो वो बैलेंस तो है ही ना। फिर से एक बार समझो कि मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स ये तीनों अकाउंट में ओपनिंग डेबिट बैलेंसेस है, तो ये ओपनिंग डेबिट बैलेंसेस का करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होना ही चाहिए। तो 8,000 मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, WIP का ओपनिंग स्टॉक 5,000, 8 और 5 13,000 और फिनिश स्टॉक का 10,000, तो 23,000 का ओपनिंग डेबिट है। देयर हैज टू बी ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस इन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। And if you forget this, then your answer is not going to tally. Answer tally होगा ही नहीं। यही सेम लॉजिक बेटा क्लोजिंग बैलेंस के लिए भी लगेगा ना। अब मेरे को बताओ क्लोजिंग बैलेंसेस का टोटल कितना है? 11,000 मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस 9,000 एंड फिनिश स्टॉक 12,000, सो इट इज 32,000। अब ये क्लोजिंग डेबिट बैलेंसेस है तो उतना ही क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में रहेगा। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड लास्ट लाइन बिफोर टोटल टू बैलेंस कैरिड डाउन 32,000। समझा क्या? एवरीबडी अंडरस्टूड?
Done? Are you with me, everyone? Transactions during the period. Material purchase. Tell me the entry for purchase of material. Stores ledger account debit to general ledger adjustment account. Stores ledger debit side to general ledger adjustment account. It is 25,000. Second effect, general ledger adjustment account by stores ledger account. Wages paid, entry for payment of wages. Wages account debit to general ledger adjustment account. Wages account debit side to general ledger adjustment account. 10,000 rupees, right? It is written in the bracket including 2000 indirect. We will give effect for that. First, complete the second effect of this entry. General ledger adjustment account credit side by wages account 10,000. स्टूडेंट्स कुछ चीजें ना अपने आप खुद ब खुद इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए. वेजेस पेड के सामने ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग 2000 इनडायरेक्ट. इसका मतलब ही 8000 डायरेक्ट है. तो डायरेक्ट वेजेस वेयर डू यू ट्रांसफर? WIP. What is the entry for that? WIP account debit to wages account. Wages account credit side by WIP account. If you want, you may write in bracket direct wages. $8,000. Go to WIP account to wages account 8,000. What about indirect wages? Where do you transfer it? Factory overheads entry. Factory overheads account debit to wages account. Wages account credit side by factory overheads account 2000 rupees. Bracket indirect wages. Go to factory overheads to wages account 2000. बरोबर है? Overheads incurred entry. Factory overheads account debit to general ledger adjustment account. Debit side of factory overheads to general ledger adjustment account 8,000 rupees. General ledger adjustment account by factory overheads 8,000. By factory overheads 8,000. ओवरहेड्स एब्सॉर्ब्ड. गाइज आज अभी लेक्चर शुरुआत किया तब भी हमने बात की. वेयर डू यू एब्सॉर्ब द फैक्ट्री ओवरहेड्स? WIP एंट्री. WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट. गो टू फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट क्रेडिट साइड बाय $9,000 ना.
9,000 rupees. Second effect, WIP account, to factory overheads, 9,000. Done? Done? Sales entry, general ledger adjustment account debit to sales account. General ledger adjustment account debit side to sales account, 50,000 rupees. Second effect, sales account by general ledger adjustment account, 50,000. The information given in the problem is over. Now we need to close these accounts one by one, and here you need to apply whatever we discussed since last lecture. सबसे पहला अकाउंट है स्टोर्स लेजर. स्टोर्स लेजर में देखो ओपनिंग बैलेंस 8,000 का है. ड्यूरिंग द ईयर रॉ मटेरियल परचेस्ड 25,000 है. सो ऐसे टोटल कितना हो गया ये 33,000 हो गया. 33,000 में से क्लोजिंग बैलेंस कितना है 11,000. मतलब बचे हुए जो 22,000 है वो क्या रहेगा. इट इज स्टोर्स इशूड टू प्रोडक्शन फ्लोर. वो फिगर दी नहीं थी प्रॉब्लम में कि कितने वैल्यू के गुड्स हमने इस साल कंज्यूम किए या फैक्ट्री फ्लोर पे ट्रांसफर किए. सो दैट इज मिसिंग फिगर हियर. तो यही चीज समझ में आना जरूरी है कि दी हुई इंफॉर्मेशन पोस्टिंग करने के बाद हर अकाउंट में मिसिंग क्या है. लाइक हियर द मिसिंग फिगर इज स्टोर्स इशूड टू प्रोडक्शन. व्हाट इज द एंट्री फॉर दैट. WIP account debit to stores ledger account. So by WIP account don't forget to put asterisk mark. कंपल्सरीली स्टार मार्क दो. बाद में स्टडी लू में जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि 22,000 की फिगर कहाँ से आई, क्यों तो ये प्रॉब्लम में दी हुई नहीं है. ये हमने बैलेंसिंग फिगर लिया हुआ है. 22,000 WIP account debit side to stores ledger, 22,000. Next account is wages. I think it is tallied. Out of 10,000 wages paid, 8,000 direct, 2,000 indirect. Tallied. Wages account is tallied. Then factory overheads. What is the total amount of expenditure that is incurred. 10,000. 2,000 wages भी तो है ना इनडायरेक्ट. तो ऐसे 10,000 का खर्चा हुआ, बट एब्सॉर्ब कितना हुआ 9,000. अब बेटा यहाँ प्रॉब्लम में कहीं नहीं लिखा है कि अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवर एब्सॉर्ब जो है वो कैरी फॉरवर्ड करो बोल के, कहीं पे भी नहीं दिया है. ओपनिंग में भी नहीं था. तो व्हाट वी आर सपोज टू डू देन, इट विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट. ये अंडर एब्सॉर्ब्ड है कि ओवर एब्सॉर्ब्ड है. अंडर एब्सॉर्ब्ड है. खर्चा हुआ है 10,000 का, बट एब्सॉर्ब कितना हुआ 9,000 ओनली. सो 1,000 इज अंडर एब्सॉर्ब्ड. इट विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. व्हाट विल बी द एंट्री. कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Asterisk mark balancing figure 1,000 rupees. Go to costing P&L debit side to factory overheads, 1,000 rupees. आया. चाहिए तो ये देखो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना, वहां पे लिख दो ब्रैकेट में अंडर एब्सॉर्ब्ड. अंडर एब्सॉर्ब्ड.
लिखा. Next, WIP account. What is missing, guys? WIP converted into finished goods. Entry. Finished goods account debit to WIP account. So WIP account credit side by finished goods account. Asterisk mark balancing figure. Total is 44,000. Correct? 35,000. Aya. Next account. Finished goods account. 2. WIP account 35,000. 2 WIP account 35,000. Now, opening finished goods 10,000. WIP 35,000. Like this, total finished goods will be 45,000. Out of that, we have closing stock of 12,000. What does it mean? Remaining finished goods are sold. So it is cost of goods sold. Entry. Cost of sales account debit to finished goods account by cost of sales. $33,000. Go to cost of sales account. To finished goods. 33,000. Cost of sales account, transfer the balance to costing by costing profit and loss account. $33,000. Go to costing P&L account, debit side, to cost of sales. 33,000. Aya? Which is the next account? To costing profit and loss account. Asterisk mark balancing figure 50,000. Total 50,000. Costing P&L credit side by हो गया? Then close costing P&L now. You will get the profit. What is the entry for profit? Costing profit and loss account debit to general ledger adjustment account. Debit side to bracket transfer of profit. बताओ 16,000 आया? General ledger adjustment account credit side by costing profit and loss account 16,000. Since we have written the closing balance already in the account, it should tally automatically. Tally हो जाना चाहिए. सब लोग चेक करो हो रहा है क्या.
Is that 82,000? Tallied? All of you got it? Any doubt? वो क्लास का साइलेंट जोन है क्या? वो बहुत शांत रहते हैं. हाँ, रिक्लाइनर है. ओह, क्या है प्रारब्ध? साइलेंट जोन में क्यों है? सो गया कि क्या है? सो गया था? समाधि. हाँ, रिक्लाइनर में तो समाधि लगेगी ना. डन. क्वेश्चन नंबर 4. अब थोड़े से अपन इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस में एंटर हो रहे, जहां पे इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दी हुई नहीं रहेगी, इनडायरेक्ट तरीके से इंफॉर्मेशन दी हुई रहेगी, एंड यू नीड टू डिराइव द फिगर्स. अमाउंट्स जो है वो रेडीमेड नहीं रहेंगे, सारे अमाउंट्स आपको डिराइव करने पड़ेंगे. फोर्थ प्रॉब्लम. फोर्थ, a fire destroyed some accounting records of a company. You have been able to collect the following from the spoiled papers and as a result of consultation with accounting staff in respect of January 2021. Incomplete ledger entries. रॉ मटेरियल अकाउंट दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट है, क्रेडिटर्स अकाउंट है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अकाउंट है, एंड फिनिश्ड गुड्स अकाउंट. एडिशनल इंफॉर्मेशन. The cash book showed that rupees 89,200 have been paid to creditors for raw material. Ending inventory of WIP included material rupees 5,000 on which 300 direct labor hours have been booked against wages and overheads. The job card showed that workers have worked for 7,000 hours. The wage rate is 10 rupees per labor hour. Overhead recovery rate was rupees 4 per direct hour. You are required to complete the above accounts in the cost ledger of the company. 5 अलग अलग अकाउंट्स के डिटेल्स अपने को दिए, और ये पांचों के पांचों अकाउंट्स इनकम्प्लीट है, और अपने को इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, इस बेसिस पे अपने को ये अकाउंट्स कंप्लीट करने को बोले हैं. गाइज, यू रिकॉल द टॉपिक ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ फाउंडेशन. उसमें भी ऐसे होता था. देखो, अपने को दी हुई इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहती थी, और फिर उस बेसिस पे हम लोग जो मिसिंग फिगर्स है वो ढूंढते जाते, एंड एक मिसिंग फिगर मिल गया कि उसके लिंक में आगे के मिसिंग फिगर एक 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 एक, एक मिलते जाते. याद आ रहा है कुछ? फाउंडेशन पास हुए आप लोग? पक्का ना? गुड. सो उसी टाइप का कुछ प्रॉब्लम है. आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, और उस बेसिस पे अपने को बची हुई इंफॉर्मेशन जो इनकम्प्लीट है, जो मिसिंग है, वो ढूंढना है. चलो सॉल्व करते हैं. इन द बुक्स ऑफ, नाम नहीं दिया है ना, इन कॉस्ट लेजर ऑफ द कंपनी, रॉ मटेरियल अकाउंट, raw material account, just for 5-6 lines. raw material account. वो जो 5 अकाउंट बोले वही बनाने हैं. WIP अकाउंट,
creditors account, manufacturing overheads account, finished goods account, finished goods account, क्या लगता है ये टॉपिक पे क्वेश्चन आया तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे? यूट्यूब स्टूडेंट्स फॉर्मेट बना रहे बेटा सब लोग, यूट्यूब पे जो देख रहे? शैल वी स्टार्ट? बहुत टाइम लगा रे लाइन मारने को यार, आप लोगों को तो परफेक्शन है, पिछले 3 साल में किया क्या है आपने 11 से आए तब से? चलो एवरीवन पे अटेंशन हियर, आई वांट फुल अटेंशन, ध्यान दो सब लोग. A fire destroyed some accounting records of a company. You have been able to collect the following from the spoiled papers and as a result of consultation with accounting staff in respect of January 2021. Incomplete ledger entries, raw material, opening balance is given, to balance brought down. To balance brought down 32,000. WIP to balance brought down, how much is it? 9,200. In same account we are also provided with one more information, one more data, and that is work in progress converted into finished goods. How much it is? 1,51,000. उसकी एंट्री क्या होती है? Finished goods account debit to WIP account by finished goods account 1,51,000. 1,51,000. क्या पूछ रहा रे ऑनलाइन में? सर पार्टी कब है? काय की पार्टी देना? मैं क्या पार्टी दूंगा? आपने देना चाहिए ना पार्टी मुझे.
मैं कैसे दूंगा? मैं गरीब आदमी क्या पार्टी दूंगा यार? हाँ, finished goods account, debit side second line, to WIP account, 1,50,1,000, debit side second line पे लिखो. During the year WIP converted into finished goods. हो गया? Creditors account, no need to tell this. Obviously creditors will always have credit balance, buy balance brought down. और अगर ये नहीं पता है कि क्रेडिटर्स में क्रेडिट बैलेंस होता है तो कूद जाओ. हाँ, सिंहगढ़ से है. 16,400. ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स अपन गए थे ना सिंहगढ़. अभी वापस गया था मैं रिसेंटली. क्या क्या? हाँ, अब तुमको लेके गया था तो वो भी बच्चे पीछे पड़ गए ना, हमको भी ले जाओ. बोलो आप कब जाना है? Creditors closing balance 19,200. Year 21, it was fantastic year. Due to COVID, classes were online and we got lot of time. In that 1 year, every Friday morning, like this, I completed 46 treks of Siangad. Every Friday morning, 4:30, we used to leave and नहीं, it's okay. मेरे को एक ट्रिक तो याद आता है. मैं और विनोद, हम दोनों, विनोद सर, सॉरी विनोद सर, विनोद बोला तो समझा नहीं तुमको. तो हम दोनों, मुझे याद है 4:15 घर से निकले. मैंने पिकअप किया है सर को. सर मेरे घर के आगे रहते. सर आगे ही है हर चीज में. मैंने पिकअप किया सर को मॉर्निंग 4:15 एंड गाइज आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज दिसंबर. सो पूरी ठंड एकदम. एंड हम दोनों ने पूरा ट्रेक, सिर्फ ऊपर जाना ही नहीं सिंहगढ़ पे ट्रेक करके, पूरा नीचे आना भी पूरा अंधेरे में. हम नीचे आने के बाद सनराइज हुआ. सो पूरे अंधेरे में हम दोनों ने वो ट्रेक कंप्लीट किया था. सर के भी कुछ मेरे हिसाब से 20-22 ट्रेक हुए थे उस टाइम मेरे साथ में. सर बाद में डिसकंटिन्यू कर दिए, बट मेरे 46 ट्रेक्स कंप्लीट हुए. वो कोविड के टाइम्स थे ना, तो टाइम भी बहुत था और एकदम मस्त टाइम था. आप में से कोई मैराथन वगैरह भागता है? तू तो प्लेयर है क्रिकेट. टू बैलेंस कैरीड डाउन 19,200. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, व्हाट इज द एंट्री फॉर अमाउंट स्पेंट? Manufacturing overheads account debit to general ledger adjustment account. $29,600. Finished goods account, to balance brought down, opening balance 24,000, buy balance carried down 30,000. The given information is posted in these 5 accounts given in the problem. तो ये सब incomplete accounts है. अब नीचे दी हुई information की fits देते हैं and then we will see how to close these accounts. Cash book showed that rupees 89,200 have been paid to creditors for raw material. Creditors को payment हुआ 89,200 rupees का. Creditors के account में आओ, to payment to creditors
आप टू कैश और बैंक भी लिख सकते हो, टू पेमेंट टू क्रेडिटर्स 89,200 रुपीज। नहीं, क्रेडिटर्स अकाउंट तो वैसे भी बनता ही नहीं ना कॉस्ट रिकॉर्ड्स में, ये तो अपने को प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है इसलिए बनाया है। ये अकाउंट तो वैसे भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स में बनता नहीं ना क्रेडिटर्स का अकाउंट। ये देने के पीछे का रीजन क्या है आपको अभी ध्यान में आएगा कि व्हाई दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। अपने को एक फिगर चाहिए, एक अमाउंट चाहिए जो दिया नहीं है, वो इस पे से मिलने वाला है, दैट इज परचेस ऑफ गुड्स। तो उसके लिए क्रेडिटर्स के थ्रू वो इंफॉर्मेशन दी हुई है। एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ध्यान दो, दिस इज इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, आई वांट फुल अटेंशन, सब लोग ध्यान दो बेटा। एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP included material rupees 5,000 on which 300 direct labor hours have been booked against wages and overheads। WIP में एक अनफिनिश जॉब है क्लोजिंग WIP में, जिसमें मटेरियल यूज हुआ है 5,000 का, और उसके ऊपर 300 डायरेक्ट लेबर आवर्स का काम हुआ है। थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ो, job card showed that workers have worked for 7,000 hours and the wage rate is 10 per labor hour। तो लेबर कॉस्ट कितनी है? 10 रुपीज पर लेबर आवर, पर लेबर आवर 10 रुपए। और अगले एडजस्टमेंट में ओवरहेड रिकवरी रेट दिया है जो 4 रुपए पर डायरेक्ट आवर है। अब क्लोजिंग WIP जो है, क्लोजिंग WIP के वैल्यूएशन में अभी तक के सम्स में, पिछले जो 3 सम्स हुए उसमें WIP का वैल्यूएशन डायरेक्टली दिया था अपने को प्रॉब्लम में, यहां पे डायरेक्टली दिया नहीं है, अपने को वैल्यूएशन करना पड़ेगा। मटेरियल कॉस्ट कितना है? 5,000। लेबर एंड ओवरहेड अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेबर वेजेस, बेसिकली लेबर मतलब हाउ मेनी आवर्स हैव बीन बुक्ड ऑन क्लोजिंग WIP? 300 आवर्स। तो 300 आवर्स इंटू रुपीज 10, सो दैट विल बी 3,000 रुपीज लेबर मतलब वेजेस, एंड ओवरहेड्स 300 hours into recovery rate per hour 4, so it will be 1200, so that 1200 will be added. So what will be the valuation of closing WIP? 5,000 plus 3,000 plus 1,200, it will be 9,200। डोंट वरी, अपन ये लिखने वाले सिस्टमेटिकली। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो क्लोजिंग WIP में जो अनफिनिश्ड जॉब है उसमें 5,000 रुपए का रॉ मटेरियल कंजम्पशन हो चुका है, 300 लेबर आवर्स काम हो चुका है, तो 300 लेबर आवर्स के वेज रेट 10 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए हो गए, एंड ओवरहेड पर लेबर आवर 4 रुपए, सो इट विल बी 1,200। सो लाइक दिस टोटल वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग WIP विल बी 9,200। गो टू WIP अकाउंट, look at the screen, how to value this buy balance carried down, rupees 5,000 plus 300 hours into rupees 10 plus 300 hours into rupees 4। Got it? कितना हो गया? 9,200 रुपीज आया। सबने लिखा बराबर? देन job card showed that workers have worked for 7,000 hours and wage rate is 10 rupees per labor hour। So what is the amount of wages? 70,000 rupees। 7,000 labor hours total हुए into 10 rupees per labor hour, so it will be 70,000। so wages are 70,000। अब अपने को बेटा अकाउंट तो बनाने को बोला नहीं है, वेजेस का अकाउंट है ही नहीं, बट अपने को WIP में उसका इफेक्ट तो लेना पड़ेगा। What is the entry for charging wages to WIP? WIP account debit to wages account. So to wages account, bracket 7,000 hours into rupees
10, it will be 70,000. ओवरहेड रिकवरी रेट 4 रुपए पर लेबर आवर है, टोटल लेबर आवर्स कितने हो गए 7,000. सो 7,000 इंटू 4, 28,000 के फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्सॉर्ब हुए. एंट्री फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्सॉर्ब्ड. वेयर डू यू एब्सॉर्ब द फैक्ट्री ओवरहेड्स? WIP एंट्री, WIP अकाउंट डेबिट टू, WIP अकाउंट डेबिट साइड टू factory overheads. Show the calculations. 7,000 hours into rupees, it will be 28,000. बरोबर. I think factory overheads account बनाया है ना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से. बाय WIP अकाउंट चाहिए तो यहां पे भी लिख दो ब्रैकेट में 7,000 आवर्स इंटू रुपीज 4, 28,000. डन. गिवन इंफॉर्मेशन इज ओवर. लेट्स क्लोज द अकाउंट्स वन बाय वन. सबसे पहला अकाउंट है रॉ मटेरियल अकाउंट. देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, हम क्लोज कर ही नहीं सकते. अपने पास सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस है. ड्यूरिंग द ईयर परचेज कितना हुआ मालूम नहीं, WIP को कितना गया मालूम नहीं, क्लोजिंग बैलेंस मालूम नहीं. 3 फिगर्स मिसिंग है तो मैं अकाउंट क्लोज कर ही नहीं सकता. व्हेन कैन वी क्लोज एनी अकाउंट? व्हेन ओनली 1 फिगर इज मिसिंग. एक फिगर मिसिंग है तो बैलेंसिंग लेने आ जाएगा. 3 फिगर्स मिसिंग है, कीप इट पेंडिंग. लेट्स गो टू नेक्स्ट अकाउंट. व्हाट अबाउट WIP अकाउंट? WIP अकाउंट में अगर आप केयरफुली देखो तो ओपनिंग बैलेंस है, वेजेस चार्ज हो गए, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आ गए, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कितना हुआ वो भी आ गया, क्लोजिंग बैलेंस भी आ गया है. क्या मिसिंग है? रॉ मटेरियल सप्लाइड मिसिंग है, तो यहां पे वो फिगर मिल जाएगा. सो व्हाट इज द एंट्री फॉर रॉ मटेरियल सप्लाइड? WIP अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ WIP अकाउंट टू raw material account, what we call as stores ledger. Asterisk mark balancing figure. Total is 160, 200. करो कैलकुलेट बैलेंसिंग फिगर. 53,000 रुपीज आया क्या? आया सबका? रॉ मटेरियल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय WIP अकाउंट 53,000 लिए. गाइज WIP अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर लिया है उसको एस्टेरिस्क मार देना भूलना मत. ये 53,000 बाद में झेपेगा नहीं आपको कहां से आया. हो गया. अगला अकाउंट क्या मिसिंग है क्रेडिटर्स में? परचेसेस मिसिंग है. बाय परचेसेस एस्टेरिस्क मार्क बैलेंसिंग फिगर. टोटल इज 1,08,400. बैलेंसिंग फिगर 92,000. Now tell me what is the entry for purchase of stores? Stores ledger account debit to general ledger adjustment account. Go to raw material account to general ledger adjustment account, bracket purchase of raw material. Amount is 92,000.
Now tell me, can we close this account? Yes, we can. We have opening balance, we have purchases, we have transfers to WIP. So by balance carried down. Asterisk mark balancing figure. Total is 124. Balancing figure is 71,000. करेक्ट है. नेक्स्ट अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. हुए कितने खर्चे? एब्सॉर्ब कितने हुए? सो अंडर एब्सॉर्ब्ड है. वेयर डू यू ट्रांसफर? बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. $1,600. Don't write ready-made answers. Apply your mind. Try to understand what we are doing. Finished goods account. You have opening balance. You have WIP converted into finished goods during the year. You have closing balance. So what is missing? Cost of goods sold. So what is the entry for that? Cost of sales account debit to finished goods. Cost of sales account asterisk mark balancing figure. Total is 175. Balancing figure. Is that difficult? आया सबका? Problem number fifth problem. The following page number 1001. The following incomplete accounts are furnished to you for the month ended 31st October 2021. Stores control account, WIP control account, finished goods control account, factory overheads control account, cost of goods sold account, मतलब cost of sales account, creditors for purchases account. Additional information. Factory overheads are applied by using a budgeted rate based on direct labor hours. The budgeted overheads for 2006 is 6,75,000 and budget of direct labor hours is 4,50,000. Again guys, here it should be 2021. ये फिर से 2006 ही आया है यहाँ पे, ऊपर 2021 दिया हुआ है. So make it 2021. ये यहाँ पे first adjustment में 2021. The closing balance in account of creditors for purchases is 15,000 and payments made to creditors amounts to 1,05,000. Finished goods inventory as on 31st October 2021 is 66,000. Cost of goods sold during the month was 1,95,000. On 31st October 2021, there was only one unfinished job in the factory. The cost record shows that rupees 3,000, 1,200 direct labor hours of direct labor cost and 6,000 of direct material cost had been charged. A total of 28,200 direct labor hours were worked in October 2021. All factory workers earn same rate of pay. All actual factory overheads incurred in October 2021 have been posted. You are required to complete the above accounts. फिर से अभी ये ऐसा ही क्वेश्चन है. फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले प्रॉब्लम में वेज रेट एंड ओवरहेड रिकवरी रेट दिया था प्रॉब्लम में, यहाँ पे दिया नहीं है, ढूंढना पड़ेगा. तो ये और उसमें का थोड़ा सा आगे के लेवल का प्रॉब्लम हो गया. पहले के 3 सम्स में सब कुछ रेडीमेड था, सारे फिगर्स अवेलेबल थे. फिर पिछला जो सम सॉल्व किया उसमें वेज रेट एंड ओवरहेड रिकवरी रेट दिए थे, उस पे से हमने वैल्यूएशंस किए.
अब यहाँ पे वो भी ढूंढना पड़ेगा कि वेज रेट कितना है एंड ओवरहेड रिकवरी रेट कितना है. 6 accounts are given in the problem which are incomplete and we are supposed to complete them. Draw the 6 accounts for just 6 lines each. In cost ledger, stores control account, stores control account, WIP control account, finished goods control account, factory overheads control account, cost of goods sold account, creditors for purchases account, creditors for purchases account, ready format.
करे स्टार्ट. समाधिस्थ लोग रेडी है? The following incomplete accounts are furnished to you for the month ended 31st October 2021. Stores control account. Go to stores account. To balance brought down 54,000. WIP account. To balance brought down 6,000. Finished goods account. To balance brought down 75,000. Factory overheads control account. Total debits for October 2021. Total debits for October 2021 मतलब paid during the month. वैसे भी लास्ट एडजस्टमेंट में लिखा भी है, ऑल फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड इन अक्टूबर 2021 हैव बीन पोस्टेड. व्हाट इज द एंट्री फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स पेड? फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 45,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंफॉर्मेशन है ही नहीं, कुछ दी हुई वहां पे, ब्लैंक है, रहने दो उसको ब्लैंक की. क्रेडिटर्स फॉर परचेसेस ओपनिंग बैलेंस 30,000. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000. पोस्टिंग इज डन. दी हुई इंफॉर्मेशन का सब पोस्टिंग कर दिया हमने. नाउ additional information. The factory rates are applied by using a budgeted rate based on direct labor hours. The budgeted overheads for 2021 is 6,75,000 and the budget of direct labor hours is 4,50,000. Working notes. Working notes. Number 1. Calculation of factory overheads recovery rate. Factory overheads recovery rate is equal to budgeted overheads divided by budgeted hours.
What is the amount of budgeted overheads? पहले ही एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 6,75,000 and budgeted hours are 4,50,000 hours. So per hour recovery rate is rupees 1.50 per hour. आया rupees 1.50 per hour. हो गया everybody? Second adjustment, closing balance in account of creditors for purchases is 15,000. Go to creditors account, last line before total on the debit side, to balance carried down 15,000. 15,000. And the payments made to creditors in October amounts to 1,05,000. Debit side only to payment to creditors 1,05,000. हो गया? The finished goods inventory as on 31st October 2021 is 66,000. Go to finished goods account. Buy balance carried down 66,000. यहां तक हो गया सबका? फोर्थ एडजस्टमेंट पढ़ो सब लोग. The cost of goods sold during the month was 1,95,000. Means the cost of finished goods sold during the month is 1,95,000. What is the entry? Cost of sales or cost of goods sold बोल रहे हैं अपन यहाँ पे. Cost of goods sold account debit to finished goods account. Finished goods account credit side by cost of goods sold. Amount is 1,95,000. Cost of goods sold account we have to finished goods account 195. आया? Fifth adjustment. On 31st October 2021, there was only one unfinished job in the factory. मतलब ये closing WIP है. Unfinished job at the end of the year, at the end of the month, sorry, not year, month. So it is closing WIP. The cost records show that rupees 3,000, 1,200 direct labor hours of direct labor cost and rupees 6,000 of direct material cost has been charged. इनडायरेक्टली यहाँ पे भी एक इंफॉर्मेशन अपने को मिल गई. क्लोजिंग WIP के बेसिस पे वेज रेट निकल जाएगा. कितना लेबर कॉस्ट पकड़ा है? अमाउंट 3,000 एंड कितने लेबर आवर्स काम हुआ है वो अनफिनिश जॉब पे 1,200. बोल तो वेज रेट कितना होता है? 3,000 डिवाइडेड बाय 1,200 इट विल बी 2.5. समझ में आ रहा है? वर्किंग नोट 2. Calculation of wage rate per hour.
on the basis of data given for closing WIP, wage rate is equal to direct labor cost divided by direct labor hours is equal to rupees 3000 divided by 1200 hours. So it will be rupees 2.5 per hour. आया? I want all of you to read fifth adjustment again and tell me what will be the valuation of closing WIP. Closing WIP का valuation कैसे होगा? लेबर डायरेक्टली दिया है 3000, मटेरियल कॉस्ट दिया है 6000 मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट 3000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने 1.5 पर लेबर आवर. और कितने लेबर आवर्स है क्लोजिंग WIP पे 1200 इंटू 1.5 1800 रुपीज. सो 1800 रुपीज विल बी टेकन. सो टोटल विल बी 10,800. आया? Go to WIP account. Credit side, buy balance carried down. Look at the screen. Material cost 6000, labor cost 3000 प्लस ओवरहेड रिकवरी के लिए कितने आवर्स है इंटू रुपीज 1.5. 6000 plus 3000 plus 1200 hours into 1.5. आया क्या? कितना आता है 10,800 रुपीज. सबका आया? A total of 28,200 direct labor hours were worked in October 2021. All factory workers earn same rate of pay. 28,200 लेबर आवर्स का काम हुआ है. तो व्हाट वुड बी द टोटल वेजेस देन? वेजेस का रेट आया 2.5. सो 28,200 इंटू 2.5 इट विल बी 70,500. वेजेस का अकाउंट दिया है क्या? नहीं दिया है, बट वेजेस विल बी रिकॉर्डेड इन WIP अकाउंट. WIP अकाउंट डेबिट साइड टू wages 28,200 hours into 2.5 it will be 70,500. सिमिलरली टेल मी 28,200 घंटों का काम हुआ है तो पर आवर ओवरहेड रिकवरी रेट कितना दिया है? रादर हमने कैलकुलेट किया है 1.5. so that much amount will be absorbed entry. Factory overheads are absorbed over WIP entry. WIP account debit to factory overheads bracket
28,200 hours into it will be 42,300 आया. ये अकाउंट बनाया ना शायद, हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट बाय यहाँ पे भी ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा दो. 28,200 आवर्स into rupees 42,300. Done, guys. Last adjustment already we have considered. All actual factory overheads incurred in October 2021 have been posted. Done. All information is over. Now we need to close the accounts one by one. First account is stores control. Again, we have only opening balance. अभी close नहीं हो सकता. Wait करो. WIP भी close नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? एक तो WIP से फिनिश्ड गुड्स में कितने कन्वर्ट हुए वो नहीं मालूम. दूसरा रॉ मटेरियल कितना सप्लाई हुआ वो भी नहीं मालूम. तो दो फिगर्स मिसिंग हुए. अगर दो फिगर्स मिसिंग है तो अकाउंट क्लोज नहीं हो सकता. पेंडिंग रखो. फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में आओ. ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास, क्लोजिंग बैलेंस है, एंड ड्यूरिंग द ईयर जो बेचे है उसका कॉस्ट मेरे को मालूम है. कैन वी क्लोज दिस? यस, वी कैन क्लोज दिस. क्या मिलेगा? ड्यूरिंग द मंथ WIP कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स एंट्री. फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट टू WIP account asterisk mark balancing figure. Total is 2,61,000. बोलो बेटा. 1,86,000 आया. Go to WIP account. Buy finished goods. $1,86,000. Now can we close this WIP? Yes. What is missing? Raw material supplied entry. WIP account debit to stores ledger control account asterisk mark balancing figure. To stores ledger control account asterisk mark balancing figure. Total is 196,800. How much? 78,000. सबका आया? Everybody got it? Second effect, stores control account by WIP control account 78,000. Which is the next account? फैक्ट्री ओवरहेड्स. इनकर कितने किए और एब्सॉर्ब कितने हुए? सो अंडर एब्सॉर्प्शन है. कहाँ जाएगा? बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितना? 2,700. Where to transfer cost of goods sold? By costing P&L.
195,000. What is missing in creditors? By purchases, what is the balancing figure? 90,000. Total is 120. आया? What is the entry for purchase of goods? Stores control account debit to general ledger adjustment account to bracket purchase of raw material. $90,000. Can we close this account now? Total is 144. Buy balance amount 66,000. Any problem in this? Last problem before lunch break. Last problem I said, huh? Before lunch break, last problem. लंच ब्रेक के बाद पहले इसके बाद और कोई प्रॉब्लम नहीं लूंगा. सिखा सकता हूं कुछ. प्रॉब्लम आखिरी है ये लंच ब्रेक के पहले का. सिक्स्थ प्रॉब्लम नॉन इंटीग्रेटेड का लास्ट क्वेश्चन है ये. देन वी विल गो टू इंटीग्रेटेड. A company operates on historic job cost accounting system which is not integrated with the financial accounts. At the beginning of a month, the opening balances in cost ledger were stores ledger control account, WIP control account, finished goods control account, building construction account, cost ledger control account. During the month, following transactions took place: material purchased, issued to production, issued to general maintenance, issued to building construction, wages, gross wages paid, indirect wages for building construction, works overheads, actual amount incurred, absorbed in building construction, under absorbed, royalty paid on production, selling, distribution and administration overheads, sales. At the end of the month, the stock of raw material and work in progress was 55 lakhs and 25 lakhs respectively. The loss arising in the raw materials account is treated as factory overheads. इसका मतलब क्या? Loss arising in raw material account is treated as factory overheads. Normal loss. It is normal loss. The building under construction was completed during the month. Company's gross profit margin is 20% on sales. Prepare relevant accounts to record above transactions in cost ledger of the company. कई सारे अकाउंट्स है. मैक्सिमम सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट भी है. चलो सॉल्व करते हैं. वैसे ये प्रॉब्लम होमवर्क भी दे सकते हैं बट विनोद सर होमवर्क देते नहीं है ना. हाँ तो इसलिए अब क्लास में सॉल्व करेंगे. अकाउंट्स में रहता तो मैं होमवर्क दे देता. ये लिखो. इन कॉस्ट लेजर ऑफ द कंपनी
in cost ledger of company stores ledger account. Stores ledger account. Seven, 8 lines. Then wages account. Five, 6 lines. Then factory overheads account. Factory overheads account. WIP account. WIP account. Finished goods account. Finished goods account. Selling, distribution and administration overheads account.
building construction account, building construction account, cost of sales account, sales account, costing profit and loss account. Finally, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. प्रॉब्लम में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बोला है तो वही बनाओ. कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. रेडी फॉर्मेट. एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट एडिशनल है जो रेगुलर अकाउंट बनाते हैं उससे, और एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ दिए हुए प्रॉब्लम में. फिर से एक बार बताता हूं मैं अकाउंट्स, एक बार देख लो. स्टोर्स लेजर अकाउंट, वेजेस अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट, WIP अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, cost of sales, sales, costing P&L and cost ledger control account. Cost ledger control account. Ready format? करें स्टार्ट. भूख नहीं लगी आपको? नहीं? फिर देखो आप. भूख नहीं लगी बोले ना आप, फिर आज लंच ब्रेक नहीं लेते. क्या क्या? मैं पार्टी दूं?
A company operates. भाई तुमको पार्टी देना तो लोन वोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा मेरे को अभी। क्या क्या? कौन सी? कहाँ है यार? देख जेब भी नहीं है तो पेन कहाँ है? कहाँ से मिलते तुमको इतनी इंफॉर्मेशन? डायरेक्टर बना तो फायदा रहता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कुछ नहीं मिलता, ना शेयर्स ले सकते ना कुछ कर सकते। हाँ, सीटिंग फीस कितनी रहती है ऐसे रह रह के? रिसेंटली recently I am appointed rather right now on one of the listed companies independent director post. So IPO will come very soon, and that too not as SME, not as small and medium scale company, but on main board. Main board पे IPO आने वाला है। आ जाएगा सब इन्फॉर्मेशन टाइम पे। पार्टी करेंगे ना आईपीओ आने के बाद? हाँ, आप लोगों ने मुझे पार्टी देनी चाहिए। हाँ, तुम सब लोग फाउंडेशन पास हुए, इंटर के क्लास कर रहे, तो पार्टी तो बनती है ना। चलो रेडी है क्या? फॉर्मेट करें स्टार्ट? यस, साइलेंट जोन करें स्टार्ट बेटा। क्या रिक्लाइनर? रिक्लाइनर ग्रुप। A company operates on historic job cost accounting system which is not integrated with financial accounts. At the beginning of a month, the opening balances in cost ledger were stores ledger, two balance brought down. एक काम करो, स्टोर्स लेजर अकाउंट लिखा है ना, वहां ऊपर लिख दो राइट हैंड साइड कॉर्नर में रुपीज इन लैक्स। अच्छा हो गया ये रुपीज इन लैक्स दे दिए, इतने बड़े बड़े अमाउंट्स मुझे झेपते ही नहीं। स्टोर्स लेजर अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80 WIP, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20 finished goods account। क्या हो गया बेटा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 430। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बाय बैलेंस brought down 540। During the month, the following transactions took place. Material purchased entry. Stores ledger account debit to cost ledger control account. Go to stores ledger account to cost ledger control account, amount 4040 rupees. Second effect, cost ledger control account by stores ledger control account 40.
Issued to production 50 entry. WIP account debit to stores ledger control account. Go to WIP account to stores ledger control account. $50. Stores ledger credit side by WIP control account 50. Issued to general maintenance. Where do you charge? Factory overheads. Entry. Factory overheads account debit to stores ledger account. Stores ledger credit side by factory overheads 6. Factory overheads debit side to stores ledger 6. Issued to building construction. Yes, capital WIP account debit to stores ledger. अब यहाँ capital WIP की जगह हम क्या बोल रहे हैं? Building construction account. So stores ledger credit side by building construction account. Four. Building construction account to stores ledger 4. Correct? Wages, gross wages paid entry. Wages account debit to cost ledger control account. Wages account debit side to cost ledger control account 150. Go to cost ledger control account by wages 150 rupees. Indirect wages are 40. Factory overheads account debit to wages account. Amount is 40. Wages account by $40. For building construction 10. Building construction account debit to wages account. Wages account credit side by building construction 10. बरोबर? Building construction account debit side to wages account 10. Works overheads मतलब factory overheads. Actual amount incurred 160 entry. Factory overheads account debit to cost ledger control account. Factory overheads debit side to cost ledger control account. How much it is? 160. Go to cost ledger control by
160 by factory overheads 160 absorbed in building construction. Factory overheads absorbed in building construction. Entry building construction account debit to factory overheads. $20 factory overheads credit side by building construction 20. Under absorbed 8. Entry costing P&L account debit to factory overheads. Factory overheads credit side by costing profit and loss account 8. Costing P&L debit side to 8. Royalty paid on production. Royalty, it is direct expenditure. Production पे pay कर रहे हैं, तो it should be charged to WIP. Correct. It should be charged to WIP. Entry WIP account debit to cost ledger control account. To cost ledger control account. ब्रैकेट रॉयल्टी. कितना रॉयल्टी पे हुआ है? 5. कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बाय WIP कंट्रोल अकाउंट कितना? 5 आया. Selling, distribution and administration overheads paid. Entry selling, distribution and administration overheads account debit to cost ledger control account. So go to that account debit side to cost ledger control account. $25. Go to cost ledger control account by selling, distribution and administration overheads account. बोलो 25 ना? 25 आया. सेल्स एंट्री कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स 450 rupees. Sales account credit side by cost ledger control account 450 rupees. यहां तक हो गया सबका? All of you completed till this? At the end of the month, the stock of raw material and work in progress was 55 lakhs and 25 lakhs respectively. Closing stock सही है. Go to stores ledger control account first. Debit side last line before total. Buy balance carried down.
Buy balance carried down 55. WIP account. Buy balance carried down 25. Buy balance carried down 25. Correct? The loss arising in raw material account is treated as factory overheads. ठीक है, कर देंगे अपन वो. The building under construction was completed during the month. Building ready हो गई बेटा. Building ready हो गई तो वो building में convert कर देंगे. But do we open building account? No. So it will be transferred to cost ledger control account. Entry cost ledger control account debit to building construction account. Credit side of building construction account by cost ledger control account. Asterisk mark balancing figure. Is that 44? Cost ledger control account debit side to $44. आया? Company's gross profit margin is 20% on sales. GP ratio 20% है. इसका मतलब cost of sales should be sales minus 20%. Go to cost of sales account. To finished goods बराबर ना. To finished goods क्या एंट्री करते हैं आप finished goods sales की? Cost of sales account debit to finished goods account bracket sales कितने 450 minus GP at the rate of 20%. Gross profit at the rate of 20%. कितना आएगा 360. Correct? Correct. Go to finished goods account by cost of sales. $360. यहां तक हो गया. अब एक एक अकाउंट क्लोज करना है. बराबर देखो क्या मिसिंग है, क्या हो रहा है. एज फार एज स्टोर्स लेजर इज कंसर्न, स्टोर्स लेजर में ओपनिंग बैलेंस है, गुड्स परचेस कितने किए थे वो भी है, क्लोजिंग है, कितने इशू किए वो दिया है, इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आ गया. या तो टैली हो जाना चाहिए, या तो टैली हो जाना चाहिए, नहीं तो लॉस है. और लॉस क्या ट्रीट करने को बोला है? नॉर्मल लॉस. फैक्ट्री ओवरहेड्स को चार्ज करना है. एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर अकाउंट बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर एंड ब्रैकेट में लिखो नॉर्मल लॉस. टोटल इज 120. बैलेंसिंग फिगर 5 लाख 5. फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट साइड स्टोर्स लेजर ब्रैकेट नॉर्मल लॉस 5. आया?
देन नेक्स्ट अकाउंट वेजेस। सब लोग ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। पे कितने हुए 150, उसमें से इनडायरेक्ट कितने थे 40, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में गए 10, तो बचे हुए क्या रहेंगे डायरेक्ट रहेंगे। डायरेक्ट लेबर कहाँ चार्ज करते हैं आप WIP में एंट्री WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट बाय WIP अकाउंट एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर। कितना आ रहा है 100। WIP account debit side to wages 100, correct? Next account factory overheads। फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या मिसिंग है फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्सॉर्ब्ड ओवर WIP। देखो अंडर एब्सॉर्ब्ड की भी फिगर दे दी है, तो फिर क्या बच गया WIP को ट्रांसफर बाय WIP अकाउंट एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर। टोटल इज 211 183 आया क्या। कॉपी मत करो बेटा, खुद के खुद कैलकुलेशंस करो। आया 183 सबका। WIP अकाउंट टू $183। अब क्या मिसिंग है WIP में कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड्स बाय फिनिश्ड गुड्स। टोटल 358, so it will be 333। it is Nelson figure 333। any idea about Nelson figure? no? 111, 222, 333 ऐसे 3 numbers same digits in UK England they consider it as Nelson number, they call it as Nelson figure, Nelson numbers। and अपने पास अपन इसको शुभ मानते हैं ना, लकी मानते हैं 111 ऐसा नंबर, वो उसको अनलकी मानते हैं यूके में। एंड अब आप लोगों तो ने नहीं देखा रहेगा, उनकी डेथ होके भी काफ़ी साल हो गए, बट क्रिकेट के एक बहुत फेमस अंपायर हो चुके हैं डेविड शेफर्ड। वेरी वेरी पॉपुलर अंपायर ही वॉज व्हेन ही वॉज देयर इंटरनेशनल क्रिकेट में, डेविड शेफर्ड। जब भी कभी वो अंपायरिंग करते थे ग्राउंड पे इंटरनेशनल मैचेस में या कोई भी मैच में, एंड किसी भी टीम का, नॉट नेसेसरली इंग्लैंड, किसी भी टीम का स्कोर अगर ऐसे 111, 222, 333 जब भी आता था, ही यूज्ड टू जंप ऑन द ग्राउंड विथ वन लेग, एक पैर पे ऐसे वो जंप करते थे ग्राउंड पे, बिकॉज दे कंसिडर इट एज अनलकी नंबर। सो दीज फिगर्स आर कॉल्ड एज नेल्सन नंबर्स, नेल्सन फिगर्स 333। नहीं, रीजन कभी मैंने देखा नहीं ऐसा क्यों, बट वो अनलकी मानते उसको। फिनिश्ड गुड्स अकाउंट टू WIP 333। क्या मिसिंग है फिनिश्ड गुड्स में? फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में क्या मिसिंग है? क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। टोटल इज 763। बैलेंसिंग फिगर 403 आया सबका। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ट्रांसफर टू
cost of sales. $25. Go to cost of sales. 2. Selling, distribution and administration overheads. कितना? 25. Where to transfer this balance? By costing profit and loss account. $300 and asterisk mark balancing figure 385. Sales account. 2 costing P&L. $450. Costing P&L debit side to cost of sales, how much? 385. By sales 450. What is the entry for transfer of profit? Costing P&L account debit to cost ledger control account. Bracket transfer of profit. Total is 450. बताओ 57 आया. Cost ledger control account by costing profit and loss account 57. Just close this account, get the closing balance. Total is 977. $483. 483 आया. आया सबका. लेट्स क्रॉस चेक आर आंसर कि अपन ने सॉल्व किया वो करेक्ट है क्या. कैलसी पे लो ना. व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टोर्स? 55 प्लस what is the closing balance in WIP? 25 plus finished goods का closing balance 403 483 आ गया. और इसका closing balance भी कितना आया है? 483 आ गया. टैली हो गया. तो total closing debit balances are equal to total credit balances. Any problem guys? Everybody understood? I want yes from everyone.
not forcefully actually. So with this we finish with non-integrated part. All 6 problems are done in the classroom. Now have a fantastic lunch, and after lunch at 2:45 sharp we will start for non-integrated, sorry, integrated cost accounting system. See you at 2:45. Thank you.
हेलो, yes, students, I hope you had your lunch. So we are done with non-integrated system, and after studying non-integrated system, studying integrated part, integrated system is very simple. The reason being, integrated system में वो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट जो बना रहे थे उसकी जरूरत ही नहीं है. अंडर इंटीग्रेटेड सिस्टम व्हाट हैपेंस, financial records and cost records are maintained in combined manner together. So since the records are integrated and together, there is no need to have any kind of control account to complete the double entry. The reason being, financials अगर साथ में ही मेंटेन हो रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, तो ऑब्वियसली कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स का अकाउंट, फिक्स एसेट्स के अकाउंट, सारे अकाउंट मेंटेन होने वाले. सिर्फ कॉस्टिंग को दिमाग में रख के रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होंगे ना, क्यों तो कंबाइंड रिकॉर्ड्स है. कंबाइंड रिकॉर्ड्स है तो कॉस्टिंग में जो जरूरी है वो भी मेंटेन होंगे, एंड जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में जरूरी है वो भी मेंटेन होंगे. तो अब अपन कैश अकाउंट भी बनाएंगे, बैंक अकाउंट भी बनाएंगे, क्रेडिटर्स का अकाउंट भी बनाएंगे, सारे अकाउंट्स बनाएंगे. तो जब सारे अकाउंट्स बन रहे हैं तो डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए जो कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम बना रहे थे उसकी जरूरत नहीं है. नाउ इन नेक्स्ट 5 to 10 minutes वी विल बी कंप्लीटिंग दिस एंट्रीज. एक भी एंट्री समझाने की जरूरत है मुझे ऐसे लगता नहीं. नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के सारे एंट्रीज हमने डिटेल में समझे, उसके 6 प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर चुके हैं. एंट्रीज तो वही है, एंट्रीज तो सेम ही है, फर्क सिर्फ कहाँ पड़ने वाला है, जहाँ पे हम वो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में इफेक्ट दे रहे थे उसके बजाय जहाँ जाना चाहिए वो इफेक्ट देना है. अच्छा, जहाँ जाना चाहिए वो इफेक्ट अगर देना है तो वो समझाने की जरूरत है मुझे ऐसा लगता नहीं, वो तो हमने 11th में सीखा हुआ है, राइट. सो कंपैरेटिवली आफ्टर स्टडिंग नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम इज अ फॉर्मेलिटी, एक्चुअली इट्स अ फॉर्मेलिटी. भगवान करे कि आपके अटेम्प्ट में इंटीग्रेटेड पे क्वेश्चन आ जाए, 8 मार्क का आ जाए, 10 मार्क का आ जाए, मेरा बस चले तो मैं बोलूँ 14 मार्क का आ जाए. 14 मार्क्स का आता है ना, एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का है ना. 30 मार्क के एमसीक्यूज है, बचे हुए 70 मार्क्स 5 क्वेश्चंस में डिवाइडेड है ना, तो 14 मार्क्स का एक होता है. ऐसा नहीं होने वाला, 14 मार्क्स के लिए नहीं पूछेंगे ये प्रॉब्लम्स. फिर भी होप इज द एसेंस ऑफ लाइफ. So let's be optimistic कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉन इंटीग्रेटेड आया तो भी हम कर ही रहे, इंटीग्रेटेड आया तो नसीब अपने. चलो क्विकली एंट्रीज देख लेते, बिना देखे भी बोल सकते हो, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम बेसिक एंट्रीज सारे. परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, stores ledger account debit to cash or bank account, and if it is credit purchase to creditors account. Purchase of material for direct use in job or process, WIP account debit to creditors or cash or bank account. Credit किसको करना है, it will depend on whether it is a cash transaction or it is a credit transaction. Purchase of material for immediate repairing work, it is charged to factory overheads, entry factory overheads account debit to cash or creditors account. Return of materials to the suppliers, creditors account debit to stores ledger account. अगर कैश परचेस है और वो रिटर्न हो रहा है तो ऑब्वियसली देन इन दैट केस कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड. बट प्रैक्टिकली व्हाट वी सी इज कैश ट्रांजैक्शंस के केस में नॉर्मली रिटर्न्स नहीं होते. कैश इज यूजुअली इन केस ऑफ रिटेल बिजनेस. रिटेल बिजनेस में हम कैश में परचेस या सेल करते हैं यूजुअली, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि कैश परचेस या कैश सेल में रिटर्न्स के ट्रांजैक्शन नहीं होते. ऐसा कोई रूल नहीं है लिखित में, कहीं राइटिंग में लिखा नहीं है, बट यूजुअली वी सी दैट रिटर्न ट्रांजैक्शंस आर इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में रिटर्न्स होते हैं.
नेक्स्ट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, नॉन इंटीग्रेटेड में हमने एंट्री की नहीं थी, बट अब इंटीग्रेटेड में तो फाइनेंशियल अकाउंट्स भी है ना, तो फाइनेंशियली तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी. द एंट्री विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. इश्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन, WIP account debit to stores ledger account. Issue of material for construction of asset, capital WIP account debit to stores ledger account. Issue of material for customer's job, service order account debit to stores ledger account. Issue of indirect material to production shops, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर अकाउंट. रिटर्न ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर्स, डायरेक्ट मटेरियल कहां चार्ज किए थे आप? WIP में, रिवर्स कर दो. स्टोर्स लेजर अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट. रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल आपने कहां चार्ज किए थे? वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में, तो वहां से रिवर्स करो. स्टोर्स लेजर अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट. मटेरियल ट्रांसफर्स की एंट्री होती है क्या? नहीं होती. नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर अकाउंट. नॉर्मल लॉस की एंट्री तो सेम है, लेट इट बी इंटीग्रेटेड, लेट इट बी नॉन इंटीग्रेटेड, बट वंस वी टॉक अबाउट एबनॉर्मल लॉस, you need to understand, under non-integrated system we prepare costing P&L account, but in integrated system we are not going to have costing P&L account, we will be having only profit and loss account, क्यों? तो financial accounts का भी profit वहीं आने वाला है. So what will be the entry? Profit and loss account debit to stores ledger account. Payment of wages, wages account debit to cash or bank account. Payment of expenses relating to production activity, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. और अगर वेंडर है कोई जिसको बाद में पे करने वाले हो आप, तो देन दैट वेंडर अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट. डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी. कल प्लांट एंड मशीनरी नहीं लिए थे हम, क्यों? तो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट ही नहीं था, तो इफेक्ट दिया था जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में, बट अभी तो अपन वो अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो एंट्री पास होगी फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. एब्सॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेयर डू यू एब्सॉर्ब द फैक्ट्री ओवरहेड्स? WIP. एंट्री WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट. चार्ज द ओवरहेड्स टू कस्टमर फॉर हिज स्पेसिफिक ऑर्डर, सर्विस ऑर्डर अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट. अगर कोई कैपिटल WIP है, कोई फिक्स्ड एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए खर्चा हुआ, तो दोस फैक्ट्री ओवरहेड्स वी विल बी चार्जिंग टू कैपिटल WIP. एंट्री विल बी कैपिटल WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट. ट्रांसफर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, WIP से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना है. finished goods account debit to WIP account. Administration overheads incurred, administration overheads account debit to cash or bank account. Absorption of administration overheads, finished goods account debit to administration overheads account. Cost of goods sold, cost of sales account debit to finished goods account. Then selling and distribution overheads incurred, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. और अगर पेएबल है तो वेंडर अकाउंट जो भी है वो. एब्सॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अकाउंट. सेल ऑफ गुड्स, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स इफ इट इज क्रेडिट सेल, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. Transfer of cost of sales to P&L, profit and loss account debit to cost of sales account. Transfer of sales, sales account debit to profit and loss account. Transfer of under absorbed overheads, profit and loss account debit to overheads account. जो भी overhead है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. नॉन इंटीग्रेटेड में हमने डेबिट किया था कॉस्टिंग P&L को, अब डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को. ओवर एब्सॉर्ब्ड है तो
reverse the entry. Overheads account debit to profit and loss account. Convert the capital asset into actual fixed asset on completion of work. Asset account debit to capital WIP account. जो भी fixed asset है, that account debit to capital WIP. And then finally transfer of profit. अब यहाँ तो प्रॉफिट आने ही वाला P&L अकाउंट में है, सो इट विल बी ट्रांसफर्ड टू, डिपेंड्स कि क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है. अगर प्रोप्राइटरी कंसर्न है तो प्रोप्राइटर्स कैपिटल, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स कैपिटल, और अगर कंपनी है तो कंपनी में प्रॉफिट कहीं ट्रांसफर नहीं होता, इट स्टेज इन P&L अकाउंट ओनली. इट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर लायबिलिटी साइड एज बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो लोग अभी डायरेक्टली ग्रुप 2 कर रहे, ग्रुप 1 किए ही नहीं है, आप लोगों को अभी ये समझना थोड़ा टाइम लगेगा. जब आप ग्रुप 1 में कंपनी फाइनल अकाउंट सीखोगे तो ध्यान में आएगा. कंपनी में प्रॉफिट कहीं ट्रांसफर नहीं होता बेटा. मतलब शेयर होल्डर्स ओनर है तो शेयर होल्डर्स का अकाउंट वगैरह कुछ नहीं रहता है. शेयर होल्डर्स के सिर्फ शेयर कैपिटल होता है. रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर लाइबिलिटी में दिखाते हैं. बात करेंगे उसके बारे में जब अपन अकाउंट सीखेंगे. जिनका ग्रुप 1 हो गया है कोई बात नहीं, इट्स ओके. सो कहीं ट्रांसफर नहीं होता कंपनी में प्रॉफिट, इट स्टेज इन P&L अकाउंट ओनली एंड विच इज शोन अंडर रिजर्व एंड सरप्लस. एनी प्रॉब्लम? सो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ एंट्री लिखी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, अज्यूमिंग कि प्रोप्राइटरी कंसर्न है. एनी प्रॉब्लम? यस सर. राघव, खाना ज्यादा हो गया या बातें ज्यादा हो गई, क्या हो गया? किसके साथ खाना खाया? हाँ, क्या बोले, समझा नहीं मेरे को. टॉमी, टॉमी come to page number 8. पेज नंबर कितना है प्रॉब्लम नंबर 8 का? 1012 1012. चलो, पे अटेंशन. In the absence of chief accountant, you have been asked to prepare a month's cost accounts for a company which operates a batch costing system fully integrated with financial accounts. एग्जाम में प्रॉब्लम केयरफुली पढ़ना बहुत जरूरी है. वो तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा इस टॉपिक का प्रॉब्लम है, बट इंटीग्रेटेड है कि नॉन इंटीग्रेटेड है वो वर्डिंग केयरफुली पढ़ो. जैसे यहाँ पे क्लियरली लिखा है, इट इज फुल्ली इंटीग्रेटेड विथ फाइनेंशियल अकाउंट्स. द फॉलोइंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू. Balance at the beginning of the month, stores ledger, work in progress, finished goods, prepaid production overheads brought forward from previous month, transaction during the month, materials purchased, materials issued to production to factory maintenance, material transfers between batches, wages paid to direct workers to indirect workers, direct wages charged to batches, recorded non-productive time of direct workers, non-productive time, selling and distribution overheads incurred, other production overheads incurred, sales, cost of finished goods sold, cost of finished goods completed and transferred, physical value of work in progress at the end of the month. The production overhead absorption rate is 150% of direct wages charged to work in progress. Required to prepare following accounts for the month: stores ledger control account, WIP control account, finished goods control account, production overheads control account, and profit and loss account.
I think they have asked only 5 accounts, but it is better to prepare all possible accounts. Understanding better आता है. एग्जाम में आप भले ही जो पूछे उतने ही बनाओ, बट अभी प्रैक्टिस के लिए क्लासरूम में सॉल्व करते हो तो अपन सारे अकाउंट्स बना लेते हैं. लिखो. क्या हो गया? Stores ledger control account. Stores ledger control account. Seven lines. Draw the format. गाइज अवॉइड क्रॉस टॉकिंग प्लीज. चलो अपने को कंप्लीट करना है. कल अपने पास एक ही दिन का टाइम है. लास्ट लेक्चर है कल का मेरा. यस, आई रिक्वेस्ट विनोद सर की पार्टी दे, मुझे भी दे. आप पार्टी करोगे सर के साथ तो मेरे को भूलना मत है. बुला लेना एक बार. Stores ledger control account, then WIP control account, WIP control account, then finished goods control account, then production overheads control account,
then selling and distribution overheads account. चेक करो तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दी है ना प्रॉब्लम में. सेलिंग एंड selling and distribution overheads account. Then cost of sales account. अच्छा वेजेस का अकाउंट रह गया क्या? हाँ वेजेस दिए ना. वेजेस अकाउंट cost of sales account. Sales account. And finally, profit and loss account. कैश एंड बैंक अकाउंट जानबूझ के बना नहीं रहा हूं, क्यों तो अभी प्रॉब्लम में सिर्फ कॉस्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस दिए है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दिए नहीं है ना. तो कैश एंड बैंक में तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी आएंगे. यस गाइज रेडी. चलो एक बार फिर से अकाउंट्स देख लो. स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितने अकाउंट हो गए टोटल? 9 अकाउंट्स. बनाओ जल्दी से फॉर्मेट. ऑनलाइन गाइज बना रहे हो फॉर्मेट? बेटा हो गया आपका फॉर्मेट? चलो करते स्टार्ट. अवॉइड क्रॉस टॉकिंग एंड पे अटेंशन हियर गाइज. चलो 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 चलो, अपने को कल कंप्लीट करना है जैसे मैंने बोला, और कल इवन विनोद सर विल बी ज्वाइनिंग.
लास्ट 1 घंटे में सर भी आएंगे. कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स का कॉम्बिनेशन है ना, तो कॉम्बिनेशन तो करना पड़ेगा ना. हाँ, टॉपिक ही वो है. और कल तो रिकंसिलिएशन है ना, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्रॉफिट का. तो रिकंसिलिएशन के लिए सर को बुलाएंगे ना अपन, आओ बोल के. In the absence of chief accountant, I want now pin drop silence. साइलेंट जोन एकदम एक्टिवेट हो गया लंच के बाद, ध्यान दो बेटा. In the absence of chief accountant, you have been asked to prepare a month's cost accounts for a company which operates a batch costing system fully integrated with financial accounts. Following relevant information is provided to you. Balance at the beginning of the month, stores ledger control account. To balance brought down. $25,000. WIP account. To balance brought down 20,000. Finished goods account. To balance brought down 35,000. Prepaid production overhead brought forward from previous month. Prepaid है, brought forward from previous month. प्रीपेड की एंट्री क्या करते हैं अपन? Prepaid expenses to expenses, and this year, this period, the last year's closing entry is reversed. So what is the reversal entry? Expenses to prepaid expenses. So to prepaid expenses कितने? 3,000 rupees. Materials purchased. Stores ledger account debit to cash or bank account. Amount 75,000. Material issued to production entry. WIP account debit to stores ledger by WIP account 30,000. WIP account debit side to stores ledger control account 30,000. Material issued to factory maintenance, it will be accounted as production overheads by production overheads 4,000. Production overheads debit side what is the amount? Just now we discussed, while discussing journal entries, material transferred between batches, do we pass entry? No. Wages paid entry, wages to cash or bank, wages account debit side
to cash oblique bank account, you may give details in inner column. Direct workers कितने? 25,000 and indirect workers 5,000 rupees. डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू बैचेस कितने चार्ज किए? डायरेक्ट वेजेस 20,000. अब एक चीज समझो आप, डायरेक्ट वेजेस पे कितने हुए बेटा? 25,000. बट उसमें से आप चार्ज कितने कर रहे हैं? 20,000 ही चार्ज कर रहे हैं. एंट्री वेजेस चार्ज टू WIP. एंट्री WIP अकाउंट डेबिट टू wages account. Wages account credit side by WIP account. $20,000. WIP account to ऑब्वियसली डाउट आएगा कि सर पेमेंट तो 25,000 का हुआ है डायरेक्ट लेबर का, बट 20,000 ही चार्ज कर रहे हैं. तो नीचे दिया है रिकॉर्डेड नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स. नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, मतलब इट इज एबनॉर्मल लॉस, अ काइंड ऑफ एबनॉर्मल लॉस. इट इज नॉन प्रोडक्टिव टाइम है लेबर का. तो नॉन प्रोडक्टिव टाइम जो होता है, एबनॉर्मल लॉस जो होता है, इट इज नॉट चार्ज टू स्टोर्स, इट इज नॉट चार्ज टू द प्रोडक्शन कॉस्ट. इट इज treated as period cost and debited to profit and loss account. Go to wages account by profit and bracket non-productive time. Amount is 5,000. P&L account. To wages 5,000. बराबर. Then सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इनकर्ड. एक मिनट, उसके पहले वो इनडायरेक्ट वर्कर्स के 5,000 रुपए है ना, वो कहां ले जाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स बाय प्रोडक्शन ओवरहेड्स. ब्रैकेट यू में राइट इनडायरेक्ट लेबर. इनडायरेक्ट वर्कर्स कितना? गो टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स. टू वेजेस 5,000. टू वेजेस 5,000. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इनकर्ड. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू अमाउंट बताओ. $6,000. अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर्ड. प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. कितना? 12,000. सेल्स कैश और बैंक टू सेल्स. अमाउंट
1 lakh. Cost of finished goods sold. Entry. Cost of sales account debit to finished goods account. Go to finished goods account. By cost of sales बताओ. 80,000. Cost of sales to finished goods. बोलो. 80,000. Then cost of finished goods completed and transferred. एक मिनट, अपन गड़बड़ कर दी है. नहीं बराबर है. सॉरी मैंने वो उल्टा पढ़ लिया. करेक्ट है. बोलो एंट्री. ड्यूरिंग द ईयर फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड. एंट्री. फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट. फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट साइड टू WIP account. 65,000. Go to WIP account. By बोलो. $65,000. Physical value of WIP at the end of the month. Closing balance of WIP by balance. $40,000. आया. The production overhead absorption rate is 150% of direct wages charged to WIP. Absorption rate दिया है फैक्ट्री ओवरहेड्स का, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का. कहाँ एब्सॉर्ब करते हैं आप उसको? WIP में. एंट्री. WIP अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स. Go to production overheads account by एक मिनट रुको. बाय WIP कंट्रोल अकाउंट. कितना एब्सॉर्ब करना है? आधा मत पढ़ो, पूरा पढ़ो. 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू WIP. कितने वेजेस, डायरेक्ट वेजेस WIP में चार्ज किए आपने? डायरेक्ट लेबर वैसे था कितना? 25,000. बट 25,000 में से 5,000 नॉन प्रोडक्टिव बोल के P&L में ले गए ना. तो WIP को चार्ज कितना हुआ है? 20,000 ही हुआ है. तो 20,000 का 150% लेना पड़ेगा. सो ब्रैकेट में क्लियरली लिखो 150% ऑफ 20,000. इट विल बी 30,000. WIP account to production overheads. $30,000 बरोबर. Given information is over. Let's close the accounts one by one. Stores ledger. क्या मिसिंग है? ओपनिंग बैलेंस आ गया, परचेसेस आ गए, ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर टू WIP भी आ गया. बराबर. फिर इनडायरेक्ट मटेरियल जो सप्लाई किया वो भी आ गया है. तो क्या बचा है यहां पे? क्लोजिंग बैलेंस. बाय बैलेंस कैरिड डाउन.
बताओ बेटा, टोटल इज 1 लाख, कितना आएगा? 66 ना। नेक्स्ट अकाउंट WIP, टैली हो रहा है क्या? हम्म, 5,000 का बैलेंस आ रहा है। कौन से टॉपिक में सिखाते कॉस्टिंग में, अब मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा। एबनॉर्मल गेन कहाँ आता है? नहीं नहीं नहीं, मैं उसका ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा हूँ, कौन से टॉपिक में आता है एबनॉर्मल गेन? प्रोसेस, हाँ प्रोसेस लॉस एक रहता है एंड एबनॉर्मल गेन भी होता है। अब आप देखोगे कि इसमें क्रेडिट बैलेंस आ रहा है WIP अकाउंट में, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है बोलते वो क्या है? एबनॉर्मल गेन है, इट इज एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन बीइंग एबनॉर्मल, it should be credited directly to profit and loss account. Debit side to profit and loss account. Bracket abnormal gain. Bracket abnormal gain. कितना रे? Total 1,05,000 बरोबर। Go to P&L account. By abnormal gain bracket. Next account is finished goods. 35,000 का ओपनिंग बैलेंस था, ड्यूरिंग द ईयर कन्वर्ट हुए WIP में से 65,000, टोटल हो गए 1 लाख, जिसमें से बेचे 80,000 के, तो 20,000 का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। कहते बाय बैलेंस कैरिड डाउन 20,000। व्हाट अबाउट प्रोडक्शन ओवरहेड्स? टोटल खर्चे कितने हो गए? प्रीपेड 3, मटेरियल 4, वेजेस 5, 7, 12, 12, 12, 24, 6,000 रुपए है, ओवर एब्सॉर्ब्ड है। अगर आप डेबिट साइड देखोगे तो एक्सपेंस हुआ 24,000 का है और एब्सॉर्ब हुए 30,000, तो ओवर एब्सॉर्ब्ड है। नहीं, P&L में भी ले सकते, बट ये मंथली है कि ईयरली है? मंथली है, तो वी कैन कैरी फॉरवर्ड इट ना, ओवर एब्सॉर्ब अगले महीने में। साल का रहा तो नॉर्मली साल के साल हिसाब कंप्लीट करते हैं। इवन इफ यू टेक इट इन P&L अकाउंट, नो प्रॉब्लम, बोथ ट्रीटमेंट्स आर पॉसिबल, वी कैन राइट अ नोट। क्या करना है बोलो? P&L लेना है, ओके। To profit and loss account, asterisk mark balancing figure 6,000, bracket over absorbed, over absorbed। लिखा? एंड में एक नोट लिखो बेटा, नोट सॉल्यूशन के एंड में। In the absence of specific information, in the absence of specific information
in the absence of specific information, the overabsorbed production overheads, the overabsorbed production overheads are credited to profit and loss account, are credited to profit and loss account. Full stop. Alternatively, those may be carried forward. Alternatively, those may be carried forward to next month. To next month. Full stop. हो गया? नेक्स्ट अकाउंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या करें? बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, $6,000. Cost of sales account to selling and distribution overheads, $6,000. नेक्स्ट अकाउंट वेजेस टैली हो गया 30,000. कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या करें? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, $86,000. P&L account debit side to cost of sales, $86,000. Next account is to profit and loss account, $1 lakh. P&L account by sales, $1 lakh. Production अच्छा ओवर एब्सॉर्ब्ड वाले ना बाय प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जिसका नोट लिखा वो बोल रहा है ना, $6,000. Total will be 1,11,000. So to net profit, tell me. $20,000 आया? आया?
डन. प्रॉब्लम नंबर 9th. मतलब आपको ऐसे लगता है आप ऐसे कुछ आवाज निकालेंगे कुछ करेंगे तो मैं छोड़ दूंगा. आज का जो टारगेट है वो तो पूरा होगा. 9 सम. कितने लोग डायरेक्ट एंट्री स्कीम से डायरेक्ट एंट्री. काफी स्टूडेंट्स डायरेक्ट एंट्री के भी है. ओके. आप लोगों को भी वैसे आना ही चाहिए, बट फाउंडेशन वालों को अगर नहीं आता रहेगा तो खिड़की खोल के लाइन से कूदना है अपने को. अभी फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेथड याद आता क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. अगले प्रॉब्लम में वो है. कॉस्टिंग में अकाउंट्स है. बहुत बार ऐसे होता है अपन फाउंडेशन में जो सीखते, फाउंडेशन पास होने के बाद अपने जूनियर्स को सजेस्ट करते, अरे कुछ नहीं रे, हो गया फाउंडेशन, कुछ नहीं रहता. बेस है वो. कहीं पे भी कोई भी कंसेप्ट कहीं पे भी पूछा जा सकता है. नॉट जस्ट एट इंटर लेवल, इवन इन फाइनल कहीं पे भी उसका रेफरेंस आ सकता है. 9 सम, पेज नंबर 1016. Bangalore Petrochemicals Company keeps books on integrated accounting system. Following balances appear in the books as on 1st January 2021. Stores control account, work in progress account, finished goods account, bank account, creditors account, fixed assets account, debtors account, share capital account, depreciation provision account, profit and loss account. Transactions for the year ended 31st December 2006 were as given below. Wages, direct, indirect, purchase of material, material issued to production, material for repairs, goods finished during the year, sales, cost of goods sold, production overheads absorbed, production overheads incurred, administration overheads incurred, selling overheads incurred, payment of creditors, payment of debtors, depreciation on machinery, prepaid rent included in factory overheads. Write up the accounts in the integrated ledger and prepare a trial balance. अब ये तो फुल फ्लेज्ड अकाउंटिंग का प्रॉब्लम है, क्यों तो ट्रायल बैलेंस ही दे दिया है ओपनिंग का. तो इस बेसिस पे जितने पॉसिबल है सारे अकाउंट्स बनाने के बोले. डोंट वरी, देखो ना कितनी जगह ब्लैंक छोड़ी है. चलो छोटा सा सॉल्यूशन है, स्टार्ट करते हैं. मैंने बोला स्टार्ट करते हैं. चलो लिखो. इन द बुक्स ऑफ Bangalore Petrochemicals Company, in the books of Bangalore Petrochemicals Company, stores control account, stores control account, five six lines. WIP account,
5-6 lines. Finished goods account. Five, 6 lines. Bank account. 5-6 lines. Creditors account. Bank account 5-6 lines. Creditors account 5-6 lines. Debtors account. Five, 6 lines. Provision for depreciation account. Provision for depreciation account 5-6 lines. Wages account. Production overheads account. Production overheads account. Then administration overheads account. Selling overheads account. Selling overheads account. Cost of sales account. Sales account.
sales account. Profit and loss account. Profit and loss account. And finally guys, trial balance. Trial balance as on 31st December 2021. छोटा सा फॉर्मेट है, ड्रॉ करो सब लोग. Particulars, debit rupees, credit rupees. चलो एक बार बताओ अकाउंट्स चेक करो. स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट, ध्यान दो बेटा मेरे पास. ट्रायल बैलेंस को पकड़ के टोटल 15 अकाउंट्स है, 14 अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस एक. स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट, WIP अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वेजेस अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अकाउंट, सेलिंग ओवरहेड्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन ट्रायल बैलेंस. फिर से देखो वापस. स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट, WIP, फिनिश्ड गुड्स, बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस. करें स्टार्ट.
देखो कितना लाइन मारने का चांस दे रहा मैं आपको। हाँ वैसे मैंने लंच के पहले बोला आपको कि विनोद सर होमवर्क नहीं देते, बट सुशील सर तो देते हैं ना। जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट, 7th प्रॉब्लम में ना, 7th पेज नंबर 1009, आज जो एंट्रीज समझा है ना मैंने इंटीग्रेटेड के, सिर्फ वो एंट्रीज एक एक ट्रांजेक्शन की लिखने हैं, प्रॉब्लम नहीं है ये। मतलब कोई अकाउंट्स नहीं बनाने, कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिए हुए ट्रांजेक्शन की एंट्रीज लिखने, सिर्फ जर्नल एंट्रीज। लिख दोगे उतना? चाहिए तो तुरंत बता देता हूं। नहीं कुछ है भी नहीं उसमें, जो समझाया वही है पूरा। अकाउंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जर्नल एंट्रीज लिखने लाइन से, नंबर 1 2 3 4 जो ट्रांजेक्शन दिए उसके। लिख दोगे क्या उतना? उतना एक होमवर्क कर लोगे? गुड। नाउ प्रॉब्लम नंबर 9th, चलो करें स्टार्ट। जोक्स अपार्ट होमवर्क सॉल्व करना सब लोग, कल अपन एक बार चेक कर लेंगे। सॉल्व करो, मतलब नया कुछ नहीं है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज लिखने हैं। मैं वापस बोल रहा हूं 5 मिनट का काम है। डोंट वरी, आई नो यू हैव फर्दर लेक्चर, टाइम पे छोड़ दूंगा मैं, चिंता मत करो, अभी टाइम है मेरे पास। Bangalore Petrochemicals Company keeps books on integrated accounting system. The following balances appear in the books as on 1st January 2021. Stores control account. Go to stores control account. To balance brought down. This is opening stock. 18,000. WIP account. To balance brought down. 17,000. Finished goods account. To balance brought down 13,000. Bank account. To balance brought down 10,000. Creditors account. Buy balance brought down 8,000. Fixed assets account. 1 minute. We have not drawn account because it is not needed. Why it is not needed? The reason being provision for depreciation account है ना, तो depreciation जो आने वाला है वो provision for depreciation account में इफेक्ट आएगा उसका. It is not going to be recorded in fixed asset account. अब I am sure, इसलिए मैंने पूछा था फाउंडेशन स्ट्रीम के कितने हैं। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है तो फिक्स्ड एसेट इज कैरिड इन द बुक्स एट इट्स कॉस्ट एंड दैट रिमेन्स सेम। तो जो भी चेंज होना है डब्ल्यूडीवी का कैलकुलेशन जो है दैट डिपेंड्स ऑन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो फिक्स्ड एसेट्स तो एज इट इज आने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस में जाओ, फिक्स्ड एसेट्स लिख दो, डेबिट बैलेंस 55,000, क्यों तो इसमें चेंज नहीं होने वाला। $55,000. Debtors account. Debtors to balance brought down. Amount 12,000. Will there be any change in share capital? Unless and until there is issue of shares, how there can be change in share capital? Share capital as it is trial balance में continue करो।
बोलो बेटा 80,000 क्रेडिट बैलेंस. Depreciation provision account, which balance we have in depreciation provision? Always credit balance in that account. Go to provision for depreciation account by balance brought down 5,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पिछले साल का कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस 32,000 है. लास्ट ईयर्स कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस. एक काम करो, नहीं उसको दो तरीके दिखाने के, P&L में ओपनिंग बैलेंस भी ले सकते हैं अपन, या तो फिर ट्रायल बैलेंस में इस साल का प्रॉफिट ऐड करके दिखाओ. बोथ वेज यू कैन शो इट. P&L अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड कितना है? 32,000. एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? So it's 4 o'clock guys, as promised we will stop here. टाइम खत्म हो गया है. 5 बैलेंसेस पोस्ट हो गए, कल के 5 मिनट अपने बच गए. तो होमवर्क सॉल्व करो 7th वाला सम सब लोग, एवरीवन. चलो सी यू टुमारो गाइस, थैंक यू, बाय बाय.